अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सऊदी अरब की। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी तारीखी कारनामा करार दे दिया। दोनों ममालिक को एशियाई में एक मेज़ पर लाने के इशारे भी दे दिए। रियाज में तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर का कहना था कि दो जौहरी ताकतों की लड़ाई में लाखों लोगों की जानें ज़ाया होने का खतरा तिजारती मराहत की पेशकश से टाला गया। पाक भारत के पास बहुत ताकतवर, मजबूत और ज़हीन क़यादत है। तशद्दुद रुक गया। उम्मीद है कि यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. Hopefully it'll remain that way, but it all stopped. I was very proud of Marco Rubio and all of the people that worked so hard. Marco, stand up. What a great job you did on that. Thank you, J.D. Vance. You know, millions of people could have died from that conflict that started off small and was getting bigger and bigger and bigger by the day.